Namaskar, good evening viewers. You are watching House Highlights on Sansad TV. I'm your host Rajiv Kumar Singh. Budget session of the Parliament began on Friday with the President's address to the joint sitting of the two houses. The Union Budget for 2025-26 was presented in the Lok Sabha on Saturday, the 1st of February. This week began with the third day of the session. In this program, we will take a look at all that transpired on Monday in the two houses of Parliament. Before we delve into the details, let us take a quick look at the headlines. Parliament discusses motion of thanks on President's address. The ruling party highlights the government's achievements during the debate. Government's functioning and policies criticized by the opposition. A vibrant and active Parliament is the lifeline of democracy. Chairman Jagdeep Dhankar addresses House at the commencement of the 267th session of the Rajya Sabha. Calls for maintaining the sanctity and dignity of the House. Says discussions and decisions should be inspired by the great aspirations of national service. And the Tribhuvan Sehakari University Bill 2025 introduced in the Lok Sabha. Bill intends to impart technical and management education and training in cooperative sector to promote cooperative research and development and to attain standards of global excellence. The proceedings in the Lok Sabha on Monday began with the question hour. The Speaker assured the protesting opposition members that they will get an ample opportunity to keep their views on every issue, including Kumbh, during the discussion on motion of thanks on the President's address, and that they should allow the question hour to proceed smoothly. माननीय सदस्यगण, महामहिम राष्ट्रपति जी ने कुंभ के बारे में भी चर्चा की है। इसलिए आप जब महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अंदर जब अपने विषय को रखें तो वो विषय भी आप रख सकते हैं। प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है और बहुत प्रयास करने के बाद माननीय सदस्यों का प्रश्न आता है। सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। इस महत्वपूर्ण विषय पर कई बार चर्चा हो चुकी है और मैं आपसे कई बार आग्रह कर चुका हूं, माननीय सदस्यगण कम से कम एक व्यवस्था बना लें। एक व्यवस्था बना लें कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी विषय को नहीं उठाने दिया जाएगा। जब मैं आपका स्थगन को अलाउ नहीं करूं तब विषय उठाया करो। कभी हम संसद की व्यवस्थाओं को तो बनाएं ना। As the opposition members continued their sloganeering, the Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju was critical of the opposition's behavior. Let us listen into what Kiren Rijiju had to say. सर, आज उम्मीद किया था कि अच्छा से पार्लियामेंट का क्वेश्चन आवर चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बार बार अनुरोध किया है, बार बार आग्रह किया है हमारे विपक्ष के साथियों को कि प्रश्नकाल को डिस्टर्ब ना करें। और ये प्रश्नकाल मेंबर का होता है, सरकार को सवाल पूछना होता है। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना चाहता हूँ। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स ने जो हरकत किया है ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ। The question hour continued amid opposition obstruction. BJP member from Shimla, Suresh Kumar Kashyap, asked a question related to the Finance Ministry. He appreciated the effort of the government to bring benefit to all sections of society through the Union Budget 2025-26. He wanted to know about the benefit of reduction in corporate tax. MS Finance Pankaj Chaudhary answered.
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए जो नवीन बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया है, इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो बजट आपने प्रस्तुत किया है, इस देश को एक नई दिशा और दिशा देने वाला बजट है और देश के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कॉरपोरेट कर की दरों में कमी से निजी क्षेत्र के निवेश में प्रभावी वृद्धि हुई है, और अगर ये वृद्धि हुई है तो कितनी वृद्धि हुई है, किस हद तक वृद्धि हुई है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि घरेलू कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए, नए निवेश को आकर्षित करने के लिए और रोजगार के लिए अवसरों को उत्पन्न करने के लिए कुछ विशेष कंपनियों को टैक्स में छूट दी गई है। इन टैक्स छूटों में देश की आर्थिक गतिविधियाँ और बढ़ी हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो विनिर्माण क्षेत्र में कंपनियों की संख्या के निर्धारण पर 2022-23 में जहां 2,838 से बढ़कर निर्धारण वर्ष 2024-25 में 3,644 हो गई है। साथ में स्टार्टअप की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और टैक्स पेयर की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और टैक्स कलेक्शन भी लगातार बढ़ रहा है। इन्हीं सब का परिणाम है कि 2014-15 में हमारी अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी, अब वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरी है। Dr. D. Purendeshwari, BJP member from Rajamundry, Andhra Pradesh, asked a question related to banking fraud and cyber crime such as digital arrest. The MOS Finance, Pankaj Chaudhary, let the House know about the efforts being made by the government to tackle the menace. Sir, India today is witnessing an increase in digital fraud cases, sir, which is an area of deep concern for us, wherein cyber criminals are actually resorting to advanced sophisticated techniques to outmaneuver law enforcement and security systems. Sir, a particularly alarming trend in this direction is the digital arrest scam, wherein fraudsters are impersonating as law enforcement officers and coercing public to part with large sums of money. Sir, additionally, the use of mule bank accounts, sir, has also escalated, wherein illicit money is actually seamlessly brought into the country. And techniques such as phishing, malware and even SIM cloning are also further compromising the financial security of millions of Indian citizens. Sir, my question would be, what is the measures that the government is taking to curb the rising menace of digital arrest scam and the misuse of mule bank accounts to safeguard the interests of the Indian citizens from the financial fraud, sir? अध्यक्ष महोदय, डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम का ही एक रूप है जिसको रोकने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस नीति है। सरकार के विभिन्न विभागों और राज्य सरकारें आपस में समन्वय कर इस घटनाओं को रोकने और अपराधियों को पकड़ने में लगी हुई है। मैं इस बिंदु पर सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी रोकथाम हेतु गठित I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा दूरसंचार विभाग के साथ समन्वय कर 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट बंद कराए गए हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधी कर रहे थे। साथ ही अन्य प्लेटफॉर्म के संदिग्ध अकाउंटों को भी बंद किया गया है। डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ सरकार के तमाम विभागों की तरफ से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और कॉलर ट्यूनर के माध्यम से आम जनमानस को डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है और हम सबको पता है कि इसमें जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को अपने मन की बात में कहा था कि पहले रुको, सोचो और एक्शन लो। हम सबको जागरूक लोगों को करने की आवश्यकता है। Lok Sabha Speaker Om Birla on Monday extended a warm welcome to the Russian parliamentary delegation led by the chairman of the State Duma of the Federal Assembly, Vyacheslav Volodin. The delegation on Monday witnessed the proceedings of both the houses. माननीय सदस्यगण, मुझे आप सबको ये सूचित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सदन के विशिष्ट
बॉक्स में रशियन फेडरेशन की फेडरल असेंबली के स्टेट डूमा के चेयरमैन मामैम व्याचेस्लाव ओलोदीन जी के नेतृत्व में रूसी संघ का संसदीय शिष्टमंडल उपस्थित हुआ है। मैं अपनी ओर से तथा सदन से की ओर से माननीय शिष्टमंडल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय श्री वोलोदीन और उनके उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा भारत रूस संबंधों की गहराई का प्रतीक है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करेगी। भारत और रूस के बहुत गहरे और दीर्घकालीन संबंध रहे हैं। इस यात्रा से हमारी दीर्घकालिक रणनीति साझेदारी व संसदीय संबंध और मजबूत होंगे। हम भारत में उनके सुखद, सफल एवं मंगलमय प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम रूस की संसद तथा वहाँ की मित्रवत जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। A bill related to cooperatives was introduced in the Lok Sabha on Monday. श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमति दी जाए। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। महोदया, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। The Lok Sabha on Monday began discussing the vote of thanks on the President's address. President Draupadi Murmu had addressed the joint sitting of both the houses on 31st of January. BJP member Ramveer Singh Bidhuri started the discussion. Later, members from different political parties took part in the discussion. Let us listen to some excerpts of the discussion. माननीय सभापति जी, मेरे लिए ये बेहद सौभाग्य की बात है कि मुझे आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण न केवल भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के वाली सरकार की नीतियों का दर्पण है, बल्कि यह देश के उज्जवल भविष्य की दिशा को भी स्पष्ट करने वाला है। आदरणीय सभापति महोदया, ये भारत का सौभाग्य है कि आज हमारे देश का नेतृत्व एक ऐसे दूरदर्शी और विश्व प्रसिद्ध राजनेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, जिनके हृदय में इस देश की 140 करोड़ जनता के लिए प्रेम का सागर उमड़ता है। उन्हें इस देश की माटी से बेहनता लगाव है और उनकी आंखों में भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना निरंतर पलता है। इस देश के विपक्ष का एक बड़ा परिवार है, वो समझता है कि हमारा इंटाइटलमेंट है इस देश पर राज करना। याद करिए, आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ क्या क्या व्यवहार किया गया था वो डॉक्यूमेंटेड है। आज मैं डॉक्यूमेंट रखूंगा। महान नेता थे वो देश के। मेरे अपने प्रांत बिहार से आते थे और आज मैं सदन को बताना चाहता हूं, राजेंद्र प्रसाद साधारण परिवार से, छपरा के स्कूल से वो कलकत्ता बोर्ड में मैट्रिक में टॉप किए। मतलब आज के बिहार, आज के झारखंड, आज के बंगाल, आज के बांग्लादेश, आज के उड़ीसा और आज के आसाम में वो नंबर टॉप करके गए थे। ये थे राजेंद्र प्रसाद। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी एलएलबी में टॉप, बी ऑनर्स में टॉप, बहुत बड़े वकील बने। पटना हाई कोर्ट में वकालत किया कलकत्ता के बाद। मुझे बताया लोगों ने 1920 में गांधी जी के कॉल पर उन्होंने वकालत छोड़ी। 20,000 पर महीना उनकी वकालत थी।
त्याग कर दिया और बाद में जेल गए। और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने काम किया, सब लोग कहते हैं संविधान बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आज जो ये पूर्वांचलियों को लेकर कुछ लोगों के मन में परेशानी है, भारत का भी विकास होगा, नॉर्थ ईस्ट का भी विकास होगा और पूर्व उदय भी होगा, ये महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक बात कही है। On the commencement of the proceedings of the Rajya Sabha on Monday, Chairman Jagdeep Dhankar conveyed birthday wishes to members Prem Chand Gupta and Naresh Bansal. The chairman informed that Prem Chand Gupta is a member from Bihar representing the Rashtriya Janata Dal. Mr. Gupta has also served as the member of Corporate Affairs of India during Prime Minister Manmohan Singh's regime. Naresh Bansal is a member of the Bharatiya Janata Party and belongs to Uttarakhand. Pleased to extend birthday greetings to honorable members of Parliament, Shri Prem Chand Gupta. Shri Naresh Bansal. Shri Prem Chand Gupta is currently in his 5th term in Rajya Sabha since April 2020, representing the state of Bihar. He is also the leader of the Rashtriya Janata Dal in the House. Shri Gupta had served as a Union Minister of Corporate Affairs under Prime Minister Manmohan Singh. He is widely traveled and has the distinction of representing India at the United Nations General Assembly thrice, in 2000, in 2002, and 2011. Shri Naresh Bansal is a distinguished member of Rajya Sabha representing the state of Uttarakhand since November 2020. Shri Bansal had served in various capacities in Uttarakhand before entering national scene. He was the General Secretary of Bharatiya Janata Party in the state for 7 years, from 2002 to 2009, and was also chairman of the Housing Development Council Uttarakhand from 2009 to 2012. The chairman expressed profound grief over the demise of P. Rajasekaran, a senior member from Andhra Pradesh representing the YSRCP. Rajasekaran had been suffering from a serious illness and was undergoing treatment at a private hospital in Srikakulam. He passed away on January 13, 2025 at the age of 80. The House observed a moment of silence in his honor. Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Sri Pallav Las Rajshekharam, a former member of this House, on the 13th of January 2025. Sri Rajshekharam served as a member of this House representing the state of Andhra Pradesh from April 1976 to 1982. Born on 1st January 1944 in the district of Sri Kakulam in Andhra Pradesh, Sri Rajshekharam dedicated his life to the welfare of farmers, tribal communities, and the marginalized sections of our society. His tireless commitment was reflected in his influential roles as the director of the Andhra Pradesh Cooperative Central Bank and the chairman of the Jila Parishad of Sri Kakulam. Further, Sri Rajshekharan served with distinction as a member of the Legislative Assembly of Andhra Pradesh,
contributing significantly to the state's legislative governance. In the passing away of Shri Pallav Las Rajsekharam, the country has lost a dedicated social worker, a champion of the rights of the marginalized, and an able parliamentarian. We deeply mourn the passing away of Shri Pallav Las Rajsekharam. I request honorable members to rise there in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. While commencing the 267th session of the Rajya Sabha on Monday, the chairman emphasized that a vibrant and functional parliament is the lifeline of democracy. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar also stated that by empowering youth with education, opportunities and a sense of responsibility, a more inclusive and sustainable future can be built. Honorable members, the 267th session of Rajya Sabha is a milestone in the constitutional journey of Bharat, being the first one convened as we march into the last quarter of the century of adoption of our constitution on November 26, 1949, an occasion of expression of profound gratitude to visionary founding fathers whose wisdom and foresight endowed us with a constitution that has remarkably shaped the destiny of our republic. In this journey of 75 years, we have embraced modernity without forsaking our timeless wisdom and heritage. Our collective dreams and aspirations have enabled strides in digital innovation and sustainable development to space exploration and infrastructure. Guided by the mantra of Vikas with Virasat, the march forward of Viksit Bharat by 2047 must be the North Star that anchors our collective efforts. It is incumbent upon us as members of this august house to rise to this calling with unwavering resolve. As the Council of States, the House of Elders, we must serve as both guardians of constitutional values and torchbearers of progressive thought. Let us emulate our founding fathers and seize the moment in history to leave our indelible footprints upon the sands of time. Our conduct must be exemplary, our deliberations wise and constructive, and our actions driven by the welfare of 1.4 billion citizens who place their faith in us. A vibrant and functional parliament is the lifeblood of democracy. In this sacred chamber, the voice of pluralistic, dynamic and aspirational society converges, particularly those of our youth who represent our nation's boundless energy and dreams. By empowering youth with education, opportunity and a sense of responsibility, we can craft a more inclusive and sustainable future. The Great Mahakumbh, a resplendent celebration of India's spiritual and cultural ascents, offers profound lessons for our journey, unity in diversity, collective well-being, and an abiding commitment to truth, tolerance, and harmony. As we engage with global community, let these principles remain the touchstones of our actions, ensuring that the well-being of every citizen remains at the heart of our endeavors. Honorable members, our task is monumental, so as to be our resolve. Let us pledge to uphold the sanctity and dignity of this House
Let our debates and decisions be guided by the noble expressions of service to the nation. Let us work together across all divides to force policies that elevate Bharat's standing on global stage. In the words of Dr. B.R. Ambedkar, the architect of our constitution, I quote, "Democracy is not merely a form of government, it is primarily a mode of associated living, of conjoint communicated experience. It is essential an attitude of respect and reverence towards our fellow men," unquote. May we ever mindful of this wisdom. As we embark upon this session, let us deliberate with purpose, cooperate with dignity, legislate with vision, mindful always that we carry the hopes and dreams of a billion hearts. Together, let us chart a course towards a future that fulfills the promise made in the Constitution. The Rajya Sabha too began the discussion on the motion of thanks on the President's address on Monday. Let us listen into some excerpts of the discussion. Our present BJP government has taken the historic decision of declaring MSP for all the Rabi, Kharif crops and commercial crops which are mandated by the Commission of Agricultural Costs and Prices at the rates 50% over and above the weighted national average cost of production. Not only this, in order to make agriculture viable and sustainable in the long run, our government has taken a multi-pronged strategy and not just done merely quick fix solutions like the erstwhile Congress government always did. मुद्रा योजना आज पहले उसमें कितना था? पहले 10 लाख, पहले और कम था, फिर उसको 10 लाख किया गया। 10 लाख को मैं बधाई देना चाहूंगा सरकार को कि उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। ये हमारे इससे नौजवान लोग इस लोन को ले रहे हैं, अपने उद्योग खोल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू में कहा था तो हमारे विपक्ष के साथी उसका मजाक उड़ाते थे कि नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। ये काम माननीय हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। And the world recognized India as a responsible nuclear power. I had the honor, sir, in 2005 of speaking in the Lok Sabha as a young MP at the age of 28 in favor of the Indo-US nuclear deal. And I think that one point which is very clear, कि this bipartisan commitment which cuts across party line, that when it comes to India's sovereignty and India's security, the country must speak in one voice. The world now recognizes us as a responsible nuclear power, and I'm extremely grateful to the Prime Minister of India, Narendra Modi ji, for initiating the next step of reforms in the nuclear sector that will ensure that we remain a leader in nuclear energy. So in the budget speech of the Finance Minister, in this budget and in the last budget, the Finance Minister spoke about how India plans to undertake major reforms in its nuclear sector. So भारत एक और historic, एक ऐतिहासिक economic reform करने जा रहा है, which will allow private sector participation in nuclear energy generation. That is all we have in House Highlights in this episode. We leave you with a quote of the day by Chairman Rajya Sabha Jagdeep Dhankar. Keep watching Sansad TV. Goodbye and good night.